Hi friends, welcome to my YouTube channel. In this lecture series of previous year questions on linear algebra, our 16th question is हमें एक 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें उसके सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज अ सोल्यूशन, हमने उसके सोल्यूशन पे कमेंट करना है. ठीक है, कि सोल्यूशन एग्जिस्ट फॉर ओनली y बिलोंगिंग टू दिस, मतलब अगर y की वैल्यूज x00 है उसी के लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. दूसरा कहते हैं 0y0 के लिए एग्जिस्ट करेगा. तीसरा कहते हैं 0y(z) के लिए एग्जिस्ट करेगा. The fourth option is for all y belonging to R cube. So let's check. Now we are given ax equals to y. Let us take x to be x1, x2, x3, and let us take y to be y1, y2, y3. And now we have the matrix A which is given to us. So सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं. So on calculating the determinant, it comes out to be 9, which is non-zero, and hence if the det is non-zero, it means that A is invertible. And now we are given that the system is ax equals y. So since the matrix A is invertible, so I will be applying A inverse on both sides. So A inverse into A will be identity. Identity times x is equals to A inverse y. So x equals to A inverse y. तो हम लोगों को क्या पूछा गया था अभी आप देखिए, हमें पूछा गया था इस ax equals to y has a solution for किस वैल्यू ऑफ y के लिए. So आप क्लियरली चेक कर सकते हैं x is equals to inverse y. So y belongs to whole R cube. There exists a solution for this. Hope आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आ गया हो. Thanks for watching. For more such videos, subscribe to my YouTube channel and don't forget to press the bell icon. And for more personalized tutorials, you may visit our website NoChalkAcademy, which I'll be mentioning in the description box. Thanks.